अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जी, आइए। तो काइंडली मुझे बताइए कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीजें देखी थी। आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, जस्ट गिव मी ग्लिम्प्स, क्या कवर हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर आपके जितने भी पेपर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेटर जो भी रिस्पॉन्स देती है वो कंबाइन करते हैं, पब्लिश करवा देते हैं, फिर वो आदमी का शेयर हो जाता है। ये कॉन्फ्रेंस का था और जनरल का भी इस तरह मैंने कुछ स्टेप्स थे। ठीक, जिसमें आपने कम्युनिकेट कर दिया था और स्टेप्स भी कर दिया था, इसको बस है एटमॉस्फेयर का और क्लैरी वेट एनालिटिक्स के बारे में बात की थी, यानी वेब ऑफ साइंस के बारे में मैंने कुछ बताया होगा आपको, इंडेक्सेशन के पर्सपेक्टिव से, फिर स्कोपस का बताया होगा, इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन कौन करता है वो बताया होगा, फिर स्कोपस में स्कोपस जनरल रैंक की बात की होगी, स्कोपस खोल के दिखाया होगा कि स्कोपस पे किस तरह से होमवर्क करके आप देख चेक कर सकते हैं। HJRS HEC का जो सर्च इंजन है वो भी बताया था। JCR नहीं, JCR तो पब्लिश होती है, जो कि क्लैरीवेट एनालिटिक्स पब्लिश करती है। HJRS HEC जनरल रैंकिंग सिस्टम, इस बारे में बात की थी। MJL मास्टर जनरल लिस्ट है, मैं थोड़ा सा एक दफा आपको रिफ्रेश कर देता हूँ कि हमने बात की होगी कॉन्फ्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से कि कॉन्फ्रेंसेस का प्रोसेस क्या है। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको दिखाई होगी, कॉन्फ्रेंसेस में रिव्यू प्रोसेस के बारे में बात की होगी, डेट्स वगैरह के बारे में उनके वेब पेज खोल के कुछ दिखाया होगा। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की होगी कि अपने अपने एरियाज में जो टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस हैं थोड़ी सी एक्सप्लोर करें, देखें कि आपके एरिया में कौन सी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कॉन्फ्रेंसेस के क्राइटेरिया को डिस्कस किया होगा कि अच्छी क्वालिटी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें टिक होती हैं। IEEE की कोई नाम होगा उसका पूरा, हाँ, तो वो आपने एक्सप्लोर अपने एंड पे करनी थी, आपको नजर आई होंगी, देखा होगा आपने, गुड। और हाँ, फिर मैंने जो क्वालिटी के बारे में बात की थी उसमें शायद ये कहा होगा कि जी अगर एक सीरीज में कॉन्फ्रेंस हो रही है, 10वीं कॉन्फ्रेंस है, 11वीं है, तो ये अच्छी कॉन्फ्रेंस है। किसी बैनर के नीचे हो रही है तो अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी। अगर इंडेक्स है या वेब ऑफ साइंस या स्कोपस के साथ तो अच्छी कॉन्फ्रेंस है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी रेशो कम है तो अच्छी कॉन्फ्रेंस है। फिर हम मूव कर गए होंगे जर्नल्स की तरफ। अगेन जर्नल, किसी एक जर्नल का वेब पेज मैंने खोला होगा, वहां मैंने आपको दिखाया होगा कि जी जनरली इम्पैक्ट फैक्टर दिया होता है, और वहां से बात शुरू करके मैंने इस तरह से कंक्लूड किया होगा कि जी वेब ऑफ साइंस जो है प्राइमरली वो डील कर रहा है इम्पैक्ट फैक्टर को, और उनके ऑर्गेनाइजर हैं क्लैरीवेट एनालिटिक्स वाले, जो हर साल JCR पब्लिश करते हैं, मास्टर जर्नलिस्ट में नाम इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से जो अच्छे जर्नल्स हैं वो इंडेक्स होते हैं वेब ऑफ साइंस के ऊपर, और इनकी इंडेक्सेशन एक नंबरिंग होती है जो उनको मिलती है। साथ ही साथ स्कोपस एक और इंडेक्सेशन एजेंसी है जो कि अगेन जर्नल्स को इंडेक्स करती है, और उनका स्कोप ज्यादा बड़ा है। उनका वेब पेज भी है, उसको आप देख के एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जी किस तरीके से, हमने खोल के देखा भी होगा कि किस तरीके से वो वहाँ पे इंडेक्स्ड है। स्कोपस के ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलता, वहाँ पे स्कोपस जनरल रैंक होता है SJR, जिसके तहत क्वार्टाइल्स डिफाइन होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, और उसमें फिर जर्नल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और आई थिंक यहीं पे हमने क्लोज किया होगा, हम फिर आगे शायद HARS पे नहीं गए होंगे, जो कि थर्ड फोरम है किसी जर्नल की क्वालिटी को जज करने के लिए। तो जर्नल्स की क्वालिटी बेंचमार्किंग में इम्पैक्ट फैक्टर एक चीज है, SJR एक चीज है, क्वार्टाइल्स एक और चीज है। तो क्वार्टाइल्स Q1 क्वार्टाइल में अगर है तो इट मींस सबसे अच्छे जर्नल की कैटेगरीज के अंदर शामिल है। डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा SJR की बेस के ऊपर, 4 लाइंस लग जाती हैं, और उसमें कुछ जर्नल्स Q1 में आते हैं, कुछ Q2 में आते हैं, कुछ Q3 में आते हैं, कुछ Q4 में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं जिनमें हमने जिक्र किया होगा। साइट स्कोर का जर्नल्स के ऊपर नजर आता है कि जी एवरेज साइटेशन पर डॉक्यूमेंट जो है वो 4 साल में एक आर्टिकल को कितनी मिली है। इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो है क्लैरीवेट वालों का, और SJR है स्कोपस वालों का, वो नजर आता है। इसके अलावा H इंडेक्स की बात की होगी। H इंडेक्स जो है वो एक आर्टिकल को
मिनिमम उसी नंबर की जो साइटेशंस मिलती हैं उनको हम एच इंडेक्स कहते हैं। लाइक अगर एक जर्नल का एच इंडेक्स 140 है तो 140 आर्टिकल्स उस जर्नल के ऐसे हैं जिनको 140 दफा साइट किया गया। तो इस तरीके से हमने ये कुछ बातें की होंगी और यहीं पे हमने फिर टाइम की मुनासबत से क्लोज किया होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, यानी जर्नल्स की क्वालिटी क्राइटेरिया को। उसमें एक जो आखिरी चीज रह गई है दैट इज दी HJRS, जो कि HEC का जर्नल रैंकिंग सिस्टम है, जो कि मिला के बनाया गया है वेब ऑफ साइंस और स्कोपस को, और उन्होंने अपने लिहाज से जर्नल्स की कैटेगराइजेशन की है जिनका हमें पता होना चाहिए। तो ऑनलाइन मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अब्दुल रऊफ और मरवान? यस सर। अच्छा जी, गुड। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम बीच में। अगर कोई आप समझते हैं कोई चीज पूछनी है तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। ओके, थैंक यू सर। So Abdul Rauf, whenever you feel that it's difficult for you to understand my Urdu, so you can just ask me, sir, kindly repeat in English. ओके सर। I'll try to talk as much in English as possible, but there would be certain places where I would be talking in Urdu. But I hope that you will be able to understand. ओके सर, नो प्रॉब्लम, वी विल। Right. Okay. Now let's open the HARS and see how it works. Let me share it with the class as well online. Let's share the screen. Okay. So I always recommend that you people bring your laptops with you so that during the lecture you can practice as well, right? Password you can collect from the Mohsin Saab, but I don't remember exactly. There is definitely a connection. You can go and ask him to give you a password. Yes, chale jaye. Okay. So Zahur Saab has it. He can give you. Okay, so Marwan and Abdul Rauf, can you see this page as well? Yes, sir. Yes. Okay, you can open it on your systems. Same is applicable to the class as well. You can do it on your smartphones if you do not have the access to your laptops, but try to bring your laptops because there are things which you will be easily doing it if you have something a bigger screen is always good. But in any case, if you do not have laptop, you can open it on your smartphones. So if you see the HJRS ranking system is being given by HEC. It is a system developed by HEC of Pakistan. HEC stands for Higher Education Commission. So they are making a computer program or this web page which allows you to search journals for their quality, and they divide the journals based on parameters computed by Web of Science and Scopus into some other categorization, and we'll see that what are those. Uh, I have already asked you to work on your titles of research, figure out some research papers, and my understanding is that you have been doing it, and some papers are there in your kitty, in your record, which you are in fact reading and trying to finalize your research topic. So if you have some papers with you, I'll request that try to figure out if you can open them and see are they conference papers or journal papers, and then try to give me a name of a journal paper which you are going through, and we can search it on the HGRS. As in parallel, you can also do the same searching. तो अगर आप लोगों ने कुछ इस तरह से फिगर आउट किया हुआ है तो मुझे किसी अपने
पढ़े हुए पेपर के टाइटल के बारे में मुझे बताएंगे आप? ठीक है, बैठिए। नाउ दिस पेपर हैज बीन गिवन टू मी बाय वन स्टूडेंट, नवाजिश साहब। तो आप यू आर रीडिंग दिस पेपर विच इज अ रिव्यू पेपर and the journal is International Journal of Electrical Power and Energy Systems and it's published by Elsevier. Elsevier is the publisher. इसके ऊपर जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप देख सकते हैं, तो आपको उस आइडिया हो जाएगा। आप सबने अपने देखने हैं, ठीक है मैडम? तो ब्लैंक यहाँ पे नहीं बैठना आप लोगों ने। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग, शुड नॉट गिव दिस फीलिंग दैट आप आज पहली दफा कुछ करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं। आई शुड बी फीलिंग दैट इट्स मोर ऑफ इंटरेक्टिव सेशन। So bring your things along. I'll be interested to know what journal papers have you read till now. I'll be asking everybody here. Give me a name. Like जिन्होंने नाम दिया ना मुझे अभी, इस तरह से आपके सबके भी एक एक नाम होने चाहिए, ठीक है? तो आप जरा अपना अपना खोल लीजिए, जो भी आपने अब तक पढ़ा है। Bring out one journal paper जो आपने पढ़ा है अब तक, because this is the 4th week, तो something should be there in your reading. समझ गए? तो हर एक अपना अपना पेपर फिगर आउट करे। मैं उन सबको यहाँ सर्च करूंगा और आप भी देखेंगे कि वो किस क्वालिटी या किस कैटेगरी में फॉल करता है। सो फर्स्ट वी विल बी गोइंग थ्रू दिस पेपर। let me, it's the main page, so I'm just writing the name of the journal. It's International Journal of Electrical Power and Energy System. So it's the first one which is already being displayed by this system. अगर ये हिस्सा है इसके डेटाबेस का, तो उसको इंडिकेट फॉरन कर देता है। आप उसको सेलेक्ट कर लें और इफ यू क्लिक दिस बटन टू फाइंड द जर्नल, it will show you the details of this journal. A page has been opened which indicates certain information about this journal as far as the HEC is concerned. So if we just see it, it shows the country of origin from where it has been publishing. Scopus, जिसके बारे में हमने बात की थी, it shows yes, means it is indexed in Scopus. This journal is indexed in Scopus. This journal is also indexed in Web of Science as shown here. ठीक है रफी साहब, visible है? Now there are certain parameters. It shows me on the right side the more important parameters, like JPI stands for Journal Prestige Index. HEC categorized the journals based on the 6 parameters shown here on the left side. Where you see that there is a term EFT. There is a term EFT stands for eigenfactor. AIF is article influence factor. Eigenfactor, EFT, eigenfactor, eigen, EIGEN. Let me share a document with you. उसको एक दफा हम स्क्रॉल भी करते हैं कि इसमें जो HARS का सिस्टम है वो काम कैसे करता है। फिलहाल सर अगर आप नोट करते हैं तो जो 6 पैरामीटर्स यहाँ लेफ्ट साइड पे गिवन है, they include EFT, which is eigenfactor, AIF, which is the article influence factor, then SJR is Scopus journal rank, H index, then CD2. CD2 is the impact factor information. In fact, CD2 is the impact factor. Then SNIP is normalized impact factor per article. So ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। बस इनकी वैल्यूज कुछ निकली हुई हैं। These values have been computed by either Web of Science or Scopus. Two main search engines, indexation agencies. They are the Web of Science and Scopus. So these 6 parameters have been gathered from those sources, and based on these 6 parameters, a formula has been developed by HEC to give the JPI. JPI is Journal Prestige Index. So it is from 0 to 100, and the value for this journal is 88. Based on it, this number JPI and some of the committee members who sits and decides about the category of journal, this journal has been placed in W category.
आपने शायद नाम सुना होगा कि WXYZ कैटेगरी में HEC जो है वो डिवाइड करती है अपने जर्नल्स को. तो W कैटेगरी जर्नल्स आर द हाईएस्ट ranking journals. A little lower is X category, then goes into the Y category, and then the Z category. So you can relate it to the quartiles. It's similar to quartile values. Q1 journals are mostly to be found in W category journals. Q2 journals would be in the X category. Q3 journals would be in the Y category. Q4 would be in the Z category most of the time. But there may be some variations or differences as well. There may be a possibility that Q2 journal can be a W category journal and Q1 can go in the X category based on the committee decision who sits for this. So HEC may formulate a committee based on various parameters, social norms and cultures. They distribute all the journals into different categories based on JPI values. Some of the other information includes that this journal has got some position out of many other journals in the same domain. Around 3,000 journals are being published to six different shades में इसको divide करते हैं जो आपकी W category होती है. Let me adjust this first. Rauf and Marwan, can you listen to my voice? Am I audible? Yes, sir. Okay. So we were discussing on HEC journal category system. Okay, so here I just repeat for the sake of refreshing that we have different categories and subcategories of journals, and in those categories, journals are categorized. There are 6 parameters which are collected, gathered from the Web of Science and Scopus, and the system itself compute the JPI and divided into W, X, Y, Z categories, decide their positions, and give them medallion as well. Medallion is the shades of category. Like W category has 6 different shades. The best shade is platinum. Then it goes down to gold. From gold, it goes to silver, bronze, then clay, then honorable mention, then null. So different shades are there. These shades allow you to decide or to think on these lines that in the next year, once it will be revised, अगर ये अपर कैटेगरी की अपर शेड में फॉल करता है जनरल, तो चांसेस हैं कि वहीं रहेगा. से अगर ये जनरल यहाँ लिखा होता कि W कैटेगरी है और जो शेड है मेडेलियन है वो नल है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर जब दोबारा कैटेगरी में आएगा, रिवीजन में आएगा, तो ये W से X में फॉल कर जाएगा क्योंकि ये लो परफॉर्म कर रहा है W के अंदर. और अगर कोई ऐसा जनरल है जो X कैटेगरी का है और उसका मेडेलियन जो है प्लेटिनम है, तो चांसेस है कि वो नेक्स्ट ईयर X से W में चला जाएगा क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी कैटेगरी में. तो इस तरीके से ये कैटेगरीज जो है वो रिवाइज होती हैं हर साल. So every year this system is revised, and if you go and see on the top of this search engine, you will find out that on the main page you will find out years as well. You can decide about the general you can see the general ranking based on which year you are searching. So currently it is for the year 2023. For after some time it will appear for year 2024 as well. So it will change. But this is how it works. This is all things. Let me share a document where these parameters are explained as well. So one can always have read or go through it for the knowledge sake. जी आइए. Let me share with you on your WhatsApp group. Okay, I've sent
report, which if you open that, and let me open here as well, it's on the WhatsApp group. Abdul Rauf and Marwan, have you got the document? Yes, sir. Please open it. Okay. So now if you just scroll it and go on to the parameters which are collected, it gives you a detailed account of everything. So see यहाँ पे वो parameters mentioned हैं जिसकी अब हमने बात की थी. EFT stands for eigenfactor. AIF is article influence score. SJR is Scopus general rank और SMIGO general rank भी कहते हैं इसको. H index, CD2 is sites per document. It is in fact the impact factor as well. SNIB is the source normalized impact per paper. So इन सब की अलग अलग definitions जो है वो देखी जा सकती है. JPS is general prestige stability. Prestige stability in fact is by those medallions which we described, which starts from platinum, goes till null, and then it goes into the general prestige index, JPI values और कुछ और चीजें जो कि इसके अंदर आपने explore कर सकते हैं. So we can go and see the definitions and maybe some of the other information from the statistics perspective, how journals are being divided. So there are a number of parameters mentioned here. In your own time, you can go through it. I'm just going to see or give you some understanding of those parameters which were there. So we can just go straight away there. I can search the eigenfactor, EFT. So it would be, this is the eigenfactor. So eigenfactor, in fact, if you go through it, I hope ये visible भी है आपको. So it's a score of a journal is measured according to its importance to the scientific community. Scores are scaled so that sum of all journal scores is 100. कुछ details इन्होंने दी हुई हैं. Okay, कोई इसका फॉर्मूला सच नहीं दिया हुआ, बट इससे आइडिया ये होता है कि हर जर्नल जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी की नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं होता, चाहे उसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा भी हो. तो ये एक रुख दिखाता है आपको किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट आइगन फैक्टर जो कि अदर देन द इम्पैक्ट फैक्टर होता है, जस्ट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ जर्नल टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. हाउ दे कैलकुलेटेड, you can explore it on ChatGPT and etc. But at the moment यहाँ पे formula given नहीं है. Then article influence score पे हम जब आते हैं तो it measures the average influence per article of the papers published in a journal. और again यहाँ पे उसने उसकी कुछ expression दी हुई कि it's the eigenfactor divided by the proportion of papers in the database belonging to a particular journal over 5 years. So कुछ calculation इसकी वो करते हैं और accordingly ये compute हो जाता है. और इनकी वैल्यूज जो है वो भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि दिस अगर इसका वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ 5-year impact factor but normalized so that a value of 1 shows that the journal has an average influence and greater than 1 indicates that the article is above average influence. तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज कुछ निकल आती हैं जो कि ये कंप्यूट करते हैं. SJR पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये स्कोपस कैलकुलेट करता है और अगेन इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है. इनफैक्ट इन सब एक्सप्रेशंस के फॉर्मूलाज ऐसा शायद अवेलेबल नहीं होंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या इंडिकेट क्या कर रहे हैं. तो SJR जो है वो जनरल रैंक है और जनरल रैंक भी अगेन बेस्ड ऑन सम साइटेशन पैरामीटर्स ही कैलकुलेट होता है. और कहा यह जाता है कि इसमें वेटेड साइटेशंस कंसिडर की जाती हैं. Like if a site is given by area expert in his her paper, that is given more importance than to a person who is very novice or a new person in that area. Like अगर आप एक रिसर्च पेपर पढ़ के उसको रेफर करते हैं, अभी आप बिल्कुल एरिया में नए हैं, तो आपकी जो वेटेज होगी वो कम होगी
और से अगर एक यूनिवर्सिटी का डीन है वो पढ़ के किसी पेपर को रेफरेंस देता है तो उसका वेटेज ज्यादा होगा, तो उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस शो होगा। जिस तरह आम जिंदगी में होता है कि किसी कुछ बंदों की वेटेज ज्यादा होती है, कुछ बंदों की फिर आस्ता आस्ता कम होती है, फिर वो करियर में आगे ग्रो करते हैं तो उनकी बर्दाश्त करते रहते हैं इसको। Rauf, there is some issue with the internet. It may be very fluent, but you can check on later or with the video recordings, and as well as if you have any question during the lecture, you can ask separately as well. अच्छा जी, इस तरह से एच इंडेक्स की वैल्यू निकली हुई है। एच इंडेक्स को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या होता है, और इस तरह से साइट्स पर डॉक्यूमेंट्स इन फैक्ट इज द इम्पैक्ट फैक्टर, और सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर, इसको भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है कि जिस मेजर्स द average citation impact of the publication of a journal. Unlike the well-known journal impact factor, this corrects the difference in citation practices between scientific fields, thereby allowing for more accurate between field comparisons of citation impact. इसका ये इस तरह समझिए कि आप ये कुछ इस तरह की एबिलिटी है एक पेपर की कि जब वो अपनी साइट हो जाता है तो उस साइट होने से उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा। तो अगेन फॉर्मूला कोई गिवन नहीं है, बट इट शोज द फ्लो और इन्फ्लुएंस, हाउ गुड अ पेपर कैन इन्फ्लुएंस। से फॉर एग्जांपल रफी साहब का पेपर रेफर हो जाए और जहूर साहब का पेपर रेफर हो जाए, so there is a possibility the influence of Rafi paper may be more than the influence of Zahoor Saab paper. So that influence can be measured by some of the metrics or some of the calculations. So that if it is possible, it is given in the SNIP values. तो अगेन अगर इसको हम कंक्लूड करते हैं इन सब चीजों को, तो समझ ये आता है कि जी कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स कैलकुलेट हो सकते हैं, उनकी बेस के ऊपर भी आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और वो कैटेगराइजेशन HEC ने जो की हुई है वो इस तरीके से की हुई है, जिसको HARS कहते हैं, और यहाँ पे आप अपने जर्नल्स को सर्च कर सकते हैं। और डिटेल में जाना चाहते हैं इनको खोल के देखिए, पढ़िए, चैट GPT से असिस्टेंस लीजिए, आपको बहुत सारी और चीजें भी पता चलेंगी। इन फैक्टर्स के ऊपर भी आपको रिसर्च पेपर्स लिखे हुए नजर आ जाएंगे। तो इन डेप्थ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर है, SJR है, और H इंडेक्स है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और इनकी बेस के ऊपर आप बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। The point to explain this was that there are various forums or platforms which categorize journals, and one should always go and see what I am reading and where I'm going to publish. So the quality of any journal has to be first established before going through its articles, or once you are able to write yourself, then if you think of publishing, again you have to see which journal I have to focus. If it is properly indexed and of some good quality, then submit your research paper, right? So this is good paper, this is a good journal, you can continue with this, or similar journals और भी आप focus कर सकते हैं। Let's figure out some of other journal as well, जो आप लोगों ने, से मैंने कहा कि एक एक करके हम थोड़ा सा सबको देखते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो आपको थोड़ा सा एक एहसास हो जाएगा कि जाके मैंने देखना है। तो रिजवाना, आपने क्या कौन सा जर्नल कोई पेपर पढ़ा है, मुझे नाम बताइए। पढ़ना पड़ेगा मैडम, अदरवाइज जो है ना ये इस तरह से ब्लैंक लुक्स मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आप काइंडली, काफी टाइम हो गया, थोड़ा फोकस कीजिए, टाइम दीजिए और चीजों को ना लेके चले। जी मैडम आप बताइए। नहीं देखा आपने भी? देखिए BS का यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अभी तो आपने नए प्रोग्राम, अभी आपने किसी टॉपिक को फाइनलाइज किया, सोचा है, तो फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन सबकी रख लेते हैं एक एक, विच हैज सम वैल्यू। ठीक है, एवरीबडी विल कम हियर, प्रेजेंट हिज हर आर्टिकल, हिज हर टॉपिक, सॉरी, कि मेरा ये टॉपिक है और मैंने ये रिसर्च पेपर्स जो है इस पे भी पढ़े। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 रिसर्च पेपर्स हैव टू बी शोन बाय एवरीबडी। ठीक है, इट कैरीज अराउंड 10% वेटेज इन द ओवरऑल ग्रेडिंग, and it will be a regular feature. ये कोई first time नहीं है, I'll be conducting it for throughout the coursework,
यानी ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर। तो ये पहली प्रेजेंटेशन आपकी नेक्स्ट वीक में होगी, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप कैजुअल ले रहे हैं, तो कैजुअल नहीं लेना इसको, इसमें थोड़ा सीरियस होकर काम करना है, ठीक है जी। रफी साहब, आपका जर्नल का नाम बताइए। That is the title, but I would be interested in the journal name. दिखाइए मुझे, मैं लेट मी फाइंड इट फॉर यू। देखिए ये नाम ऊपर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज योर जर्नल। सो आई एम जस्ट सीइंग कि क्या ये जर्नल अच्छा जर्नल है कि नहीं, मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। और अगर और कोई भी है तो मुझे बताइए। आप इसमें से जो समझते हैं कि बेस्ट वन दिस यू आर फोकसिंग व्हिच इज वेरी क्लोजेस्ट टू योर टाइटल, वो कौन सा है? ओके जी, तो इनका जर्नल का नाम अगेन दिस जर्नल इज पब्लिश्ड बाय विली। Okay, so if you see this publisher is the must give you a confidence. If publisher is a well-known publisher, most of the time the journal will be of good category, right? So the अच्छे publishers हैं, I've already announced those names. I gave you a name of IEEE, I gave you a name of IET, I gave you a name of Wiley, IET, I gave you a name of ACM, I gave you a name of Elsevier, I gave you a name of Springer, Taylors and Francis, Hindawi, MDPI. They are good publishers and they publish many journals, right? So if a good publisher name is there on any journal name, against a journal name, should be little confident that this journal would be a good one. So Wiley is a well-known publisher. So let us still search the journal, what this journal is. So the journal name is जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स, राइट? नीचे बॉटम फुटनोट के अंदर इसका नाम लिखा हुआ है, जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स। सो लेट अस सर्च दैट नेम ऑन द जर्नल ऑफ पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक अफेयर्स। सॉरी, मैं नाम स्पेलिंग अलग कर दूं, पब्लिक। So it's here, right? So if you search this engine, okay, so the search is visible to the online participants as well. No, share it. No. Acha, let me search, let me share again. But I think you can relate my sentences once I'm talking. I'm showing it to you as well. Now, this is the one of the journal which is being studied by one of our colleague, Mr. Rafi. So उनका जो आर्टिकल है वो इस जर्नल में पब्लिश हुआ है, जो यहाँ पे भी आपके सामने विजिबल है, जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स। एंड देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स रिलेटेड टू दिस जर्नल व्हिच आर मेंशन्ड हियर, कि इसका JPI जो है वो 62 है, ये W कैटेगरी जर्नल है, ब्रॉन्ज मेडेलियन के साथ है, यानी इसका शेड जो है वो ब्रॉन्ज है, इसकी सब्जेक्ट एरिया पोजीशन 1505 है, और कुछ और पैरामीटर्स लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, जिसमें इसका इम्पैक्ट फैक्टर 4.15 यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। स्कोपस में ये यस है, वेब ऑफ साइंस में ये यस है। तो इस तरीके से वन कैन ऑलवेज कमेंट के दिस पेपर इज गोइंग टू बी अ गुड पेपर। वन कैन ऑलवेज गो थ्रू इट, मेक इट एज अ बेसलाइन पेपर, और फर्दर इसकी बेस के ऊपर बिल्ड कर सकता है। तो ये अच्छा एक जर्नल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी पेपर पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बैठिए। तो ओके जी, रफी साहब हो गए। सर आपका कोई पेपर अगर है तो मुझे सिर्फ नाम बताएं, अपना नाम नहीं, जर्नल का नाम। इंटरनेशनल
जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। आगे क्या है? बस बस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, पर इसको स्टिल आई कैन सी कि क्या ये क्लिक होता है कहीं पे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, सो ये कह रहा है जी अनेबल टू फाइंड यूजिंग द टाइटल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट मींस कि दिस जर्नल इज नॉट बीन इंक्लूडेड इनटू दिस रिपोजिटरी ऑफ HARS। वन कैन ऑलवेज गो एंड सर्च ऑन टू दी स्कोपस में भी, वहां पे भी शायद वहां पे हो। अगर मैं स्कोपस जनरल रैंक में सर्च करता हूँ जाके तो ओके जी, यहाँ जाके इसको भी इधर भी टाइप कर लेते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। सो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी है, बहुत सारे और जर्नल्स यहाँ शो हो रहे हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि यू नीड टू गो एंड चेंज योर आर्टिकल, गो एंड सी क्या इन जर्नल्स के अंदर आप अगर एक्सप्लोर कर सकें इसी टाइटल को। what you can do, open the web pages of these journals and explore your keywords over there. Maybe you will find better papers than what you are following, because this journal is not indexed in any database. So purpose of these two couple of lectures was the same, that you should, all of you should explore that whatever I'm reading is from some good source of publication. But nevertheless doesn't mean that this paper is not good. ये भी मैं आपको क्लियर करूं। आपने अब अपनी जजमेंट कॉल देनी है, अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, अपने सुपरवाइजर से इन टच होना है और उसके बाद आपने सोचना है कि यार अगर ये पेपर में कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं तो मैं इसके अंदर से भी कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को पब्लिश करते हुए पता नहीं होता कि कौन सी जगह मैंने पब्लिश करना है, तो अच्छे काम भी बाज़ औक़ात किसी बुरे जर्नल में पब्लिश हो जाते हैं। ठीक है जी, व्हाट क्वेश्चन यू आर आस्किंग? वीडियो स्विचिंग जी आइए, इट्स फाइन। वीडियो अगर आप वीडियो स्विच ऑन नहीं कर सकते नजीर तो आप ऑडियो पे सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। आई डो नॉट नीड टू सी योर फेसेस, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। आई होप दिस हैज मेड सम सेंस अमंग यू गाइस। आपको कुछ थोड़ी आइडिया हुआ है कि जी हमने अपने काम को कहीं ना कहीं पहले वेट करना है, ऐसे नहीं बस। ठीक है, मतलब वो हमने भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलना, हमने कुछ सोच समझ के काम करना है। ठीक है जहूर साहब, अगर आप भी कुछ मुझे मेंशन कर सकें व्हाट आर्टिकल्स यू आर रीडिंग फ्रॉम। अगर हम HARS पे चले जाते हैं और से आपके जर्नल के नाम को सर्च करेंगे, ह्यूमन कंप्यूटर, आप जर्नल का नाम बता रहे हैं या आप? अच्छा, पूरा नाम तो ये नहीं है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के नाम से तो नहीं है। जर्नल जो आ रहा है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मोबाइल, वेब ऑफ साइंस पे निकला है। ओके, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इसी नाम से जर्नल है। अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, इट्स गुड, बट मुझे तो कह रहा है कि अनेबल टू फाइंड। दिखाइए। लेकिन चैनल का नाम कुछ और है सर। अच्छा कंप्लीट आपसे ये तो सर्च कर रहा हूँ कि मुझे पूरा नाम बताएं। आप कह रहे हैं यही नाम है जो आप मुझे, तो जनरल नेम इज नॉट दी वन जो कि आप कह रहे हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में अब आपने लेकिन अपने पेपर पे देखना है, कहीं ये तो नहीं कि पेपर पे कुछ और नाम लिखा हुआ है जर्नल का, आपने लिख के टाइप कर लिया है। थोड़ा ये भी इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है।